So very good evening class. Today's class of the MCQ class number 14, UGC-NET paper 2 Mass Communication Journalism. We are having some conceptual based questions. So here we will start with the questions that it is related with the semantics. So when signs are organized into the systems, they will become what? The questions, please read it. The question, this is conceptual based question. So read it twice or thrice. Okay. So options are here. The codes, letters, words, and attitudes. Everybody, please answer very conceptual based questions. Here it is. When signs are organized into the systems, okay, they will become what? जब साइन को आप एक ऑर्गेनाइज कर दोगे, एक सिस्टम में डाल दोगे, तो वो क्या होगा? दैट दे विल बिकम कोड्स. ओके, वो क्या बन जाएगा? कोड्स बन जाएगा. चलिए, वेरी गुड, एवरीबडी इज हियर राइट. सही तो है, बट देयर आर सम ऑफ द हिडन कॉन्सेप्ट. कुछ कॉन्सेप्ट हिडन है जो आपको जानना जरूरी है इस क्वेश्चन से. वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरेटिकल क्लासेस. इस क्वेश्चन का वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी नो the sign systems. Okay, sign system, that is basically that key concept in semantics, and it is used to refer to any systems of the signs and relations between the signs that we have already discussed in the previous classes about the relations between the signs, right? So science related questions हमने discuss कर लिया था. If you have having that questions, so आप लोग उस questions को comment में लिखिए कौन सा questions हमने last classes में discuss किया था that was related with the semantics. Okay, so signs are organized into the codes into two ways. It is organized in two ways. कितने ways में organize होता है? Two ways में इसको organize किया जा सकता है, right? वो कौन कौन सा two ways है? One is that paradigms, और second that is syntagms. Okay, ये दो चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है. Very important conceptual based questions that they can ask from these two ways that signs are organized, right? So always remember, signs are organized into the codes. It is true, but it is in two ways. कोड में तो ऑर्गेनाइज किया ही जाता है, लेकिन इसको दो वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है. वो कौन कौन सा तरीका है? दैट इज पैराडिम्स एंड द सिंटैगम्स. अब पैराडिम्स एंड सिंटैगम्स क्या होता है? सो सी द कॉन्सेप्ट हियर. In the natural language, the vocabulary of the language is one paradigm. There are the grammatical paradigms such as verbs or nouns. You know that कि sentences, जब हम sentence बनाते हैं, उस sentence में क्या होता है? Sentence में हमारा grammar होता है, right? The grammar is there in the sentence. That is the nouns, pronouns, verb, adjective, each and everything are there in the sentences. That is what the grammatical paradigm searches, like the verbs, such as like the nouns, pronouns, each and every concept it is here that to form the sentences, right? Sentences बनाने के लिए उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको हम अलग अलग चीज को हम पैराडाइम बोलते हैं, right? Another we can take the another example here. Grammatical paradigm से अगर थोड़ा हटकर अगर एग्जाम्पल है, we are having the second example that to understand the paradigms. Okay, so here you can read the sentences to in order to understand the syntagms also. That is syntagms क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. पैराडिम्स तो हमने जाना कि दैट इज कि एक तरीके का उस कोड्स होता है जहां पर हम एक किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, दैट इट इज हियर रिटन. प्लीज एक बार देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं. सिंटैगम और द यहाँ पर आपका syntagm is orderly combination of the interacting signs which forms a meaningful whole, sometimes called a chain. In this case of the film or the interpretation of individual shot depends on the both paradigmatic analysis, that is compare it and not necessarily consistently with the use of alternative kind of sorts. So यहाँ पर एक editing का example है. ठीक है, editing में दो चीजें होती है. ठीक है, एक आपका इस तरीके like first shot, second shot, third shot, fourth shot, okay, and fifth shot. We have taken here the example of the timeline. ये आपका टाइमलाइन है एडिटिंग का, एंड यू हैव अरेंज्ड इन द ऑर्डर्स. आपको इस तरीके से आपने क्या किया, सारे शॉट्स को यू हैव अरेंज द
शॉर्ट्स, ठीक है, सारे शॉर्ट्स को क्या किया आपने, अरेंज किया. नाउ द थिंग इज टू अंडरस्टैंड द सिंटेगम्स एंड द पैराडिम्स. Syntagms is always orderly combination of the interacting signs, right, which forms a meaningful whole, right? So it is also called as chain. Chain को हम क्या बोलते हैं, syntagms भी बोलते हैं. Okay, yes, subject and predicate is syndicate. Very good, very good, बहुत ही अच्छा. सो सी एडिटिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन आवर फिल्म आवर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इंडिविजुअल शॉट, अगर हर एक शॉट का आप इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस करेंगे, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस, राइट, our interpretation of individual shot depends on the both paradigmic analysis and also the schematic analysis. दोनों चीजों पे एनालिसिस होगा, डिपेंड करता है कि पैराडिग्मेटिक में एनालिसिस में you just compare it, right, you compare with the another shots, right, you compare with the another shot. It means that आप क्या करते हो, यहां पर ऑल्टरनेटिव शॉट्स भी लगा सकते हो, राइट. अगर आपको ये शॉट्स अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन जस्ट रिप्लेस इट, राइट, you can replace it. 2 will on the 5 and 5 will come on the 2. So this is what that we can interpret of the each and individual shots. We can alternative kind of, we are having here the alternative kind of shots that we can replace the things, right. So this is what about the paradigmatic. But when the symptomatic में क्या होता है, that is comparing with the preceding and the following shots. हम पीछे वाले शॉट से कंपैरिजन करेंगे या फिर आगे वाले शॉट से कंपैरिजन करेंगे, राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट द syntagms and the pragmatics. Okay, yes. So दो चीजें आपको ध्यान रखना है बस. दिस इज व्हाट इंडिविजुअल शॉट्स हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, इंडिविजुअल शॉट्स, दैट वी कैन से दैट ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ शॉट्स, alternative kind of sorts. It means we can replace the sorts. But in the syntagms, what we do, we compare with the, जल्दी से बताएंगे, we compare with the preceding and following shots, right? या तो हम preceding shot से comparison करते हैं या फिर हम following shots से comparison करते हैं. We compare with the precedings and the following shots in the syntagms, but in the paradigms what happens, we can replace the, because we are having the alternative kind of sorts, so we can replace the things. So this is what kind of the paradigms and syntagms. Okay, it is clear. In a postmodern society, culture is, postmodern society में culture क्या है, regulated, B, commodified, traditional, and D, that is non-pluralistics. Everybody. In a postmodern society, culture is, very good. Just read it twice or thrice the questions. Definitely you will reach to the solutions. Yes, absolutely. Very good. Awesome answers that everybody has given. That is what B answer. It is right, right? B जो है वो right है. Postmodern society में culture जो है commodified हो गया. That we know. See, the postmodern culture is characterized by the valuing of the activities, events, or the perspectives that emphasize the particular over the global or the fragment over the whole. It means the postmodern जो है हमारा society है, right? That is what the society of the, that we give the values of that activities or the events or the perspective that emphasize the particular over the global. जो पूरे बाजार में, पूरे वर्ल्ड में जो चीज फैला हुआ है उसको हम लोग, जो सब लोग यूज कर रहे हैं, everybody is using that, the things around the globe. That is what the, it may be the some events, it may be the activities, it may be the culture, it may be the language, it may be the anything, right? So that is what the postmodern society. So here it is, we are talking about the culture, right? How postmodern affects the culture. So here we have included the definition of the commodifications. What is here the commodifications? That means the transforming something into a product for the commercial purpose, right? An item to be bought and sold in the market. So what is here the commodifications? It means that you are transferring something into the product for the commercial purpose. That is what commodifications, right? So intangible cultural heritage is frequently used in the commercial sectors like that. आजकल आपने देखा होगा बहुत सारा चीजें जो कल्चर रिलेटेड जो चीजें होती है ब्रांडिंग में, कंपनी के नेम में, प्रोडक्ट्स में, वो सारी चीजें यूज होने लगी है, राइट?
many of the things that we are using as a cultural products in the branding, in the logos, in the products, in the company names, right? So this is what that we can understand how the things are being commodified, right? So for an example, here we have attached to the culture of a nation that revolves around the services such as fast food products or the such as cars experience such as the theme park. Okay, जो हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट द कल्चर, दैट इज द फूड कल्चर, राइट? यस, मेटेरियलिस्टिक चीजें हम जो लोग यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही औसम आपका आंसर्स है, ठीक है, वेरी गुड सजेशंस दैट यू आर गिविंग हियर, वेरी गुड रचना. So that is the fast food as well as the materialistic things, also the products such as like the cars. Okay, so these are the things that we are using. These are the cultures that we are using. Okay, so culture is here the commodified, right? So commodified means that is what transferring something into the products for the commercial purpose. Always remember. It is clear? जल्दी से बताएंगे clear है ये questions? All right. Next. Question number 124. No new information is available in. No new information is available in dynamic communication. B. Internal communication. C. Static communication. D. Conflict communications. अगर आपको yes, very good. I got the answer from the Varnika and everybody is answering right. Very good. बहुत ही सुंदर. So this is what about this is. No new information is available in the static communications. Very good. बहुत ही सुंदर. Static communication क्या होता है? What is static communications? That the greetings, right? Hi, hello, how are you? Yes, good afternoon, good morning class. Okay, good evening aspirants. So these are what the things that is the static expressions, static communications. So do you find something new information in that static communication? आपको लगता है कि कोई रोज शाम को सुबह को एवरी डे आई कम इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एंड से दैट गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स. सो देयर इज समथिंग न्यू इन द इंफॉर्मेशंस. एवरीबॉडी नो, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट नो न्यू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द static communications, right? So for an example here we have given, so you can understand it. Chaliye. Now the question number 125. Redundancy helps in solving the problems associated with. Please go through the redundancy and entropy, right? हम लोगों ने redundancy और entropy related questions किया हुआ है. आपको याद होगा higher predictability and lower predictability. Okay, unpredictability. Sorry, higher predictability and higher unpredictability questions related हमने किया था. So आपको ध्यान होगा तो please you can solve it, right? So redundancy helps in solving the problems associated with the option. It is here the equipment, B the law, C the audience, and D the political systems. Everybody, very important questions. Something the problems associated with solving the problems. Actually redundancy जो होती है वो क्या करता है, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो किससे एसोसिएटेड है. Yes. So right answer it is that is C. Very good. Absolutely. C answer जो है आपका right answer है audience. We know that redundancy हो या फिर entropy हो, that is the both we use in communication. दोनों communications का part है, right? And communication that is for the audience, you can simply understand it, right? The communication that is for the audience, the receivers. So redundancy is the repetitions of the elements, right? It is the repetitions of the elements within a message that prevents the failure of the communications, right? Communication of informations. Redundancy क्या होती है? It is the repetition of elements like the things we use it, right? हम लोग दो चीजें एक तरीके का यूज करते like the merge together, right? Merge or together. So this is the things that repetition of elements within a message that prevents the failure of the communications of informations, or you can understand that in terms of the predictability. So entropy refers to the message which convey higher unpredictable information to the receivers, whereas redundancy it is refers to the message which convey high predictable information to the receivers, right? So they can ask you the question also
हाई प्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू रिसीवर इज, जल्दी से बताएंगे, entropy or the receiver, sorry, entropy or the redundancy? Yes, very good, that the redundancy. Okay, yes. So जहां पर आपकी हायर प्रेडिक्टेबिलिटी है, राइट, वी नो दैट, हमें पता है कि वो ऐसा बोलेगा, वी कैन इन्फेरेंस दैट, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यही आंसर आएगा, राइट. इफ आई विल सी दैट good morning aspirants or the good evening aspirants, definitely I know that you will also respond, right? This is what the predictable information that I can guess it, I can inference it, right? So this is what the convey high predictability information to the receiver, it is known as redundancy. Okay, so redundancy ही हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है. क्यों? क्योंकि हम अनुमान लगा पाते हैं, राइट. वी कैन इन्फरेंस इट, वी कैन गेस इट, सो दैट्स व्हाई रिडंडेंसी जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कम्युनिकेशन में, दैट इज एसोसिएटेड विद द ऑडियंस, राइट. सो इन केस ऑफ द एंट्रोपी, एंट्रोपी इज बेसिकली टू हाईली अनप्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर्स, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लाइक, सो दैट एग्जांपल आई कैन गिव यू, लाइक स्मोक, ठीक है, और फायर, ठीक है. कभी घर में आग लग जाती है, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन लाइक द सरप्राइज, सरप्राइज इट इज एंट्रोपी और रिडंडेंसी, जल्दी से बताएंगे सरप्राइज क्या है, रिडंडेंसी है या एंट्रोपी है? यस, दैट्स द एंट्रोपी, वेरी गुड. सरप्राइज जो होती है वो क्या होता है? एंट्रोपी होता है. वी डू नॉट नो दैट व्हाट गिफ्ट वी विल गेट, राइट. हमें कौन सा गिफ्ट मिलेगा वो मुझे नहीं पता, दैट इज व्हाट द सरप्राइज. सो हाई अनप्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इट इज, एंट्रोपी, राइट. चलिए, जहां पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है वो रिडंडेंसी होती है, जहां पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं वो क्या है? आपका एंट्रोपी है. क्लियर है? आई थिंक दिस क्वेश्चन इट इज क्लियर टू यू, राइट. रिडंडेंसी और एंट्रोपी, इट इज क्लियर एवरीबॉडी? यस, all right. Now the next thing it is here, Vivendi Universal is a well known media organization of it. आप लोग के लिए नया ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अब तक आप लोगों को नहीं पता होगा. अगर पता है तो बता दीजिए किस कंट्री का है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड वर्णिका. सो विवेंदी यूनिवर्सल इज अ वेल नोन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड स्टेट्स and D, that is Canada. जल्दी से बताएंगे, everybody will answer. 6 seconds is left. विवेंदी यूनिवर्सल, विवेंदी यूनिवर्सल बहुत ही पुरानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही पुरानी, राइट. और इफ आई कैन गेस यू, हु इज द फाउंडर ऑफ द विवेंदी यूनिवर्सल? विवेंदी यूनिवर्सल का फाउंडर बताइए, जल्दी से बताएंगे. दिस कंपनी, द फाउंडर, एवरीबॉडी वांट यू हिंट? आप लोग हिंट चाहते हैं? यस, सो हिंट इज दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, जल्दी से बताएंगे. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, फाउंडर डोंट नो. चलिए, नेपोलियन थर्ड. ओके, Napoleon III, that is the founder of the Vivendi Universal's media organizations. चलिए, so this is the things that you can get the explanations. Vivendi Universal is a French mass media holding company headquarters in the Paris. So widely known as the owner of the Gameloft gaming companies. Okay, Gameloft Group, Canal, Havas, Editis, Prisma Media, Vivendi Village, and Daily Motions. The company has activity in the television, film, video game, book publishing, print press, communication, tickets, video hosting services. सभी में इनका क्या है? एक्टिविटीज है, सभी में कुछ ना कुछ सभी का है. So this is what the media organization company very large. So कब ये established हुई? Founded in 1853. Yes, 1853, and founded by
नेपोलियन थर्ड, ओके, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, ओके। चलिए, क्लियर है? विवेंद्र यूनिवर्सल के बारे में जल्दी से बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, विवेंद्र यूनिवर्सल्स, राइट, फ्रेंच मास मीडिया कंपनीज, and it involved in various activities like the television, film, video game, book publishing, printing, communication, tickets, video hosting services। इसमें सारी चीजों में क्या है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। चलिए नेक्स्ट, which was the newspaper that Mahatma Gandhi edited in the year 1919? Very important questions. Which was the newspaper that Mahatma Gandhi edited in the year 1919? It's not A, इंडियन ओपिनियन 1919 में आया ही नहीं है, नेशनल हेराल्ड, सी पायनियर, एंड डी सत्याग्रही। जल्दी से बताएंगे। ग्रेट, आफ्टर लुकिंग ओवर द ऑप्शंस everybody is trying, okay, let's check here that whether it is right or wrong. So the newspaper that Mahatma Gandhi edited in the year that in the 1990, it is D, very good, सत्याग्रही न्यूज़पेपर। बहुत ही सुंदर। चलिए तब एक एक न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन कर लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, दैट वाज द न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1903, ओके, बाय द महात्मा गांधी। National Herald, that the newspaper started in the Lucknow in the year 1938 by the Jawaharlal Nehru, right? Pioneer is the newspaper that started in the Allahabad in the year 1865 by the George Allen, okay. Satyagrahi is the newspaper, see, under the editorship of the Gandhi. It was unregistered newspaper called Satyagrahi, was published from the 7th of April 1919, okay, protecting against the Rowlatt Bill, okay, Rowlatt Bill के against में ये protest किया इस newspaper ने। So they can ask you the questions, which was the newspaper which was established in the year 1990 in protesting against the Rowlatt Bill, ओके। रॉलेट बिल को इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे, दैट इज द सत्याग्रही न्यूज़पेपर, यस। सो सत्याग्रही न्यूज़पेपर दैट वाज स्टार्टेड इन द 1919। और चलिए अब फाउंडर का नेम लिख लेते हैं बारी बारी से। महात्मा गांधी स्टार्टेड, इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, Pioneer newspaper that was started in the 1865 by the everybody George Allen, okay, yes. Satyagrahi by the Mahatma Gandhi and editorship of the Gandhi, okay. चलिए ये एडिटेड है, फाउंडेड नहीं है, ठीक है। एडिटेड मींस एडिटरशिप ऑफ द गांधी। चलिए क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है एवरीबॉडी? ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप लोग गूगल यूज करते हैं? गूगल, व्हेन गूगल वाज लॉन्च, जल्दी से बताएंगे गूगल कब लॉन्च हुआ? गूगल एवरीबॉडी, 4 सितंबर 1998, यस। चलिए फाउंडर ऑफ विकिपीडिया, जल्दी से बताएंगे। विकिपीडिया आज लोग पैसे बहुत आजकल मांगा जा रहा है, विकिपीडिया डोनेट करो डोनेट करो। जल्दी से बताएंगे फाउंडर ऑफ विकिपीडिया।
On 21st of November, which day is celebrated? Everybody, on 21st of November. जल्दी से बताएंगे. Everybody, on 21st of November, which day is celebrated? चलिए 21st ऑफ नवंबर को आप लोग इसको ढूंढिए. 21st ऑफ नवंबर को क्या मनाया जाता है? दिस इज योर टास्क. ओके, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन 19th of August, 19th of August, everybody, which day is celebrated 19th of August? नाइनटीन्थ ऑफ अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, राइट? क्लियर है? जल्दी से बताएंगे. क्लियर है? थर्टीथ ऑफ नवंबर, जल्दी बताएंगे. 30th ऑफ नवंबर. यस, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, राइट. वेरी गुड. आज ही के क्लास में हमने डिस्कस किया था. यस. नंबर 6, वॉच टावर मैगजीन, वेरी ओल्ड मैगजीन. वॉच टावर मैगजीन वॉज लॉन्च्ड. लॉन्च्ड बताएंगे कब लॉन्च हुआ? वॉच टावर मैगजीन. बताइए. राइट आंसर, दैट इज 1879. 1879 वॉच टावर मैगजीन. ओके, यूएसए का मैगजीन है. नाउ नेक्स्ट, गेम इनफॉर्मर. गेम इनफॉर्मर इज ऑल्सो द मैगजीन. जल्दी से बताएंगे. लॉन्च्ड इन द ईयर, बिकॉज these आर द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, राइट? और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ऑप्शंस में है ये. गेम इनफॉर्मर लॉन्च्ड इन द ईयर. आंसर्स 1991. इसकी एक आप लोग लिस्ट बना लीजिए प्लीज, जो है उसको याद कर लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, मुंबई मिरर इज द सिस्टर न्यूज़पेपर ऑफ. बताइए जल्दी से. मुंबई मिरर इज द सिस्टर न्यूज़पेपर ऑफ. मुंबई मिरर, जल्दी से. यस, टाइम्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, बॉम्बे समाचार. बॉम्बे समाचार लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ बॉम्बे समाचार? एवरीबॉडी. वेरी गुड, 1822. सब कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. सो दिस वेर ऑल अबाउट दैट वी हैड डिस्कस. ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे. बिकॉज go slowly and slowly and clear it all the questions. ठीक है. So this was all about that we had discussed the questions, conceptual based questions. So please remember all the things. Okay. चलिए, कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? चलिए समराइजेशन पार्ट में आते हैं. जल्दी से समराइजेशन कीजिए. समराइजेशन पार्ट, क्या क्या आपने सीखा? फर्स्ट टॉपिक्स बताते चलिए जल्दी से. सत्याग्रही न्यूज़पेपर, वेरी गुड.
Satyagrahi newspaper that was established in the year 1990 by the Mahatma Gandhi. Yes. Vivendi Universal Media Organization, founder Napoleon III. Yes. Also, fatigue communication. We discussed fatigue communications. Yes. Google launched in the year 1998. Fifth, Wikipedia by the Jimmy Wales. Yes. Very good. और no new information in the fatigue stage. Yes. No new info. कोई नया information नहीं होता है. Also, yes, very good Dimple. 21st of November World Television Day. 21st of November क्या है? World Television Day. Yes. और about also that discuss the redundancy. Yes. Redundancy के बारे में और हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ एंट्रोपी के लोग लेकर भी हमने डिस्कस किया, राइट? यस. ऑल्सो अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी डे वी हैव डिस्कस. ओके. यस. साइंस. यस, साइंस को हमने ऑर्गेनाइज इन द सिस्टम दैट बिकम्स द कोड. यस, वेरी गुड रचना. साइंस दैट आर ऑर्गेनाइज इनटू द सिस्टम्स एंड दैट बिकम द कोड्स. Yes. Also, we have discussed the paradigm and the syntagm. Okay. Very good. Paradigm और syntagm हमने डिस्कस किया जिसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखा था. Yes. Pioneer by the Pioneer newspaper. Very good. By the George Allen. नेशनल हेराल्ड ऑल्सो न्यूज़पेपर. ये सारी चीजें जो जो डिस्कस हो रहा है, प्लीज टॉपिक आप लोग एक लिखते जाएंगे और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. ओके. लास्ट मिनट रिवीजन इट विल हेल्प यू. इंडियन ओपिनियन. यस, बाय द गांधी. अप्रैल 21st पीआर डे. यस. ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कमोडिफाइड. यस. नेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया है. यस. सो वी हैव कवर्ड थिंग्स लॉट ऑफ द टॉपिक दैट इज आल्सो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे. वेरी गुड. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे. वेरी गुड. विवेंदी यूनिवर्सल हमने डिस्कस कर लिया. यस, विवेंदी यूनिवर्सल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रांस, राइट, इन द 1853. वेरी गुड टेरी. यस. गेम इन्फॉर्मर मैगजीन. यस, गेम इन्फॉर्मर मैगजीन of the USA 1991. और ऑल्सो वॉच टावर मैगजीन. वॉच टावर मैगजीन भी हमने डिस्कस किया. ठीक है. यस, वॉच टावर मैगजीन इन द 1879. यस. ऑल्सो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को लेकर भी हमने डिस्कस किया, राइट? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी in terms of the culture that we have discussed, how the postmodern society affects the culture in terms of the commodifications. Yes, very good. So ये सारी चीजें very much important. It is all important. Please make the notes of all the topics, right? कितने topics आप cover कर रहे हैं daily? It is, please make the proper notes, right? How much topic you are covering from the questions answers? Please make the notes. It will definitely help you for the revisions in the last minute, right? जब लास्ट मिनट बचा रहेगा वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा. सो प्लीज आप लोग जितने टॉपिक्स हम समराइज करते हैं वो सारे टॉपिक को आप किसी लिस्ट बना लीजिए, राइट? मेक द प्रॉपर लिस्ट ऑफ द ऑल द टॉपिक्स. इट विल हेल्प यू व्हेन द एग्जाम विल बी वेरी नियर. ठीक है. सो ऑल राइट, थैंक यू टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. टुमारो वी विल मीट. ऑल राइट, वेरी वेरी गुड नाइट. थैंक यू सो मच.